another lecture. My voice is audible. Okay, I got your message. Lecture, my voice is audible. Yes, sir. Okay, so we have started the vectors. Can you tell me what the last topic we have done? Lecture. What was the last topic we have done in vectors? Is it a Multiplication of vector by scalar? Okay, okay, okay. ठीक है, होमवर्क आई गेस ज्यादा नहीं दिया था, है ना? अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. Properties of multiplication of a vector. सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, नॉर्मली आपको पता ही है, बट फिर भी हम करते हैं इसको. फॉर वेक्टर्स A, B and scalar Mn, we have first is m into minus a. Okay, हमारे पास कोई वेक्टर है, हमने माइनस से लिखा, तो आपको पता है व्हाट इज मीन बाय माइनस से, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विद m. तो ये क्या हो जाता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस बिकम माइनस m into a. ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि माइनस m into a. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता है, बट कोर्स में है इसलिए हम कर रहे हैं. ठीक है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है. सेकेंड, अगर माइनस m है इंटू माइनस a, इसको डिस्कस ही कर लेते हैं. सो वन बाय वन प्लीज टेल मी द आंसर. लक्ष्य, कैन यू टेल मी क्या हो जाएगा? M vector A. M into vector A, very good. Next, third is M, and there's one more scalar A, sorry, N into A. This is equal to M A. This is equal to, इसको N भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं, तो फिर हम A भी कह सकते हैं. Next is fourth is M plus N vector A is equal to M into vector plus into vector A. Fifth one, M into A plus B, two vectors हैं, so this is equal to MA plus MB. ठीक, इसमें कुछ न्यू नहीं है, आपको पहले से ही पता है. Please note down this, then we will start the next topic. If you have any doubt, please let me know. Please confirm one. Answer.
Okay, sorry, question lecture, my mic was on mute. Okay, so we are discussing about the position vector of a point. If a point O is fixed as the origin in space and P is any point. Okay, this is the origin. Origin आपको पता है, इसमें हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे. So अगर ये हमारे पास origin है और ये हमारे पास कोई एक point है, this is point. Then अगर हम इसको join करते हैं OP, so OP is called the position vector of P with respect to. ठीक है, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं, that's your wish, आप किसी से भी इसको डिनोट कर देंगे. So this OP is called the position vector of point P. Okay, so if O is the origin and P is any point, this can be in space, this can be in any plane, आप इसको join करते हैं, OP is the position vector. क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक पॉइंट दे देगा, क्या इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए, वो आप फाइंड कर सकते हैं. आपको पता है ओपी जो होगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट. नोट डाउन दिस. फिर कुछ और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें, यानी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम कहते हैं, सो दैट इज द पोजीशन वेक्टर. नोट डाउन दिस. Okay, great. Lakshay, please confirm. Done, sir. Okay. Now, next topic is a vector in terms of position vector. A vector in terms of position vectors of its end points. Of its end. So what does this mean? Suppose हमारे पास 2 points हैं. Suppose this is a origin. Point हमारे पास 2 points हैं. Point A. Next point हमारे पास B. Okay. These 2 points have the position vector A and B. So if we will draw like this, is the origin and O is the position vector of point A. Next, OB is the position vector of point. This is the position vector. This one. This P is the position vector of point P. And if you will join this one, AB, we will join this AB. Please take care. O to A and then A to B. So अगर इसमें हम triangle law of vector addition apply करते हैं, okay, from this origin you have moved here and then to here, and you are going directly from here to here. So that means OP is equal to OA plus AB. ये हमें पता है. अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे तो इसको शिफ्ट कर देते हैं. तो we can say AB is equal to OB minus OB minus OA. Okay, so that means AB is equal to position vector of B, position vector of B, position vector of B minus position vector of point A, ओके. तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 2 पॉइंट्स आपको दे देगा और उसके पोजीशन वेक्टर देगा, आपसे कहेगा कि फाइंड द वेक्टर AB. तो हमेशा याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल. So this is your final point B. So position vector of point B minus position vector of point A. That's clear? Kush and Lakshya. Okay, Kush, I got your reply. Lakshya, this clear? Yes, sir.
Okay, please note down this, confirm me, then we will try some questions on the basis of this. Sorry, switch. Okay, okay, complete. Okay, good. Please try this question. Question is the position vector. The position vector. The position vectors of the position vectors of points A, B, C, D. Position vector points A, B, C, D are vector A, B, 2A plus 3B, and A minus 2B. A minus 2B, respectively. Respectively. Show that dB is equal to 3B. dB is equal to 3B minus A, and AC is equal to A plus 3B. Please check this. ठीक है, ये सब इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, फॉर्मूला हमें पता है. प्लीज ट्राई दिस. Okay, good, very good. Lecture, please let me know once this is done. Okay, lecture, very good. Then please start this. ABCD is a parallelogram, and these are the position vectors of A, B, and C with reference to the origin. Find the position vector of D with respect to origin. So I will draw a parallelogram for you. फिर आप easily इसको कर सकते हैं. So this is the parallelogram. This is A, this is B, this is C, this is D. It is have this A, this is B, this is C, and this is D. ठीक है, ये इनके position vectors of these points.
तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है. Okay, and I've given you the direction because ये जो हमारी साइड्स होती हैं पैलोग्राम की, these two are equal. ठीक है, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं. So I have shown with this. Now you can try. Please find D. The answer is C plus A minus B. Very good. This is correct. Akshay, please let me know if you have any doubt in this. So problem आ रही है इसमें. अब यहाँ क्या है, these two sides parallelogram की opposite sides parallel भी होती हैं और equal भी होती हैं. So we can say that AB is equal to this one, DC. Okay, ये direction लिया इसलिए I have written DC. AB का मतलब B minus A, DC का मतलब C minus D. हमें क्या चाहिए D. So shift this D to here. We'll get C plus A minus B. Okay, Lakshya? Yes, sir. Okay. Please note down this and confirm me. Then we will start the next topic. Done, sir. Okay. Wait. Now next, we have section formula. Section formula. Okay. So section formula coordinate geometry में आप काफी कर चुके हैं. And आपने 10th में किया, then 11th में किया आपने. Now we will do this section formula in vectors. So कैसे करते हैं? Everything भी हमारे पास पॉइंट होगा, उसका रेफरेंस हम रीजन से लेंगे, that means position vector. फिर उसको हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला. सो दिस इज आवर ओरिजिन. एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट ए, दिस हैव द पोजीशन वेक्टर ए. ज्वाइन कर देते हैं इसको. एक और पॉइंट ले लेते हैं बी, इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, लेट दिस बी बी, दिस बी ए. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी. नाउ ज्वाइन दिस. Suppose we have taken a point C here. And if we join this origin to C, we get this position vector. So we have 2 points A and B having the position vector A and B. We have taken a point C on this AB. Position vector is C. Now this point C divide AB internally. Okay. यहाँ जो हमारा section formula है, that is for internal division. So the first is for internal division. Internal division.
ओके, सब फिगर में क्लियर है, एक्सप्लेन करने की अब इसको दोबारा जरूरत है। नाउ ये पॉइंट सी कैसे है, दिस पॉइंट सी डिवाइड दिस ए बी इन द रेशियो ऑफ m is to n, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ठीक है। वी हैव दिस ab, दिस पॉइंट c डिवाइड दिस ab इन द रेशियो ऑफ m is to n, so ये m है एंड दिस इज n। तो हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c, position vector point C, so that means of point C का मतलब हमें फाइंड करना है OC, ठीक है। और OC क्या होगा, दिस, तो कैसे होता है m into this, so यानी m into B plus n into this, n into A by m plus n, so this is the formula exactly सेम है जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, एक्सटर्नली में बस माइनस आ जाएगा, इसका प्रूफ करते हैं। Okay, so we have this AC, by next we have this CB, लक्ष्य बता सकते हैं AC by CB कितना है? लक्ष्य AC by CB कितना होगा? AC by CB कितना है? ये m हो गया, ये n हो on गया, the side. m by ये लक्ष्य है, Yes, sir. then cross multiply n into AC is equal to m into CB, ठीक है। अब वेक्टर ले लेते हैं इसका, n into वेक्टर AC is equal to m into वेक्टर CB, n into AC का मतलब C minus A, ठीक है, हम कर चुके हैं अभी। अगर हमें कोई वेक्टर फाइंड करना है, अच्छा, अगर हमें A भी फाइंड करना है, then position vector of B minus position vector of A. Similarly, we need to find AC, position vector of C minus position vector of A is equal to m, this is m into CB. CB का मतलब B minus C. Okay. हमें क्या चाहिए, हमें बस C चाहिए, so just open the bracket, shift the terms, okay, solve, minus NA is equal to MB minus MC. Shift this 3 to the left side, and C plus MC is equal to MB plus NA. Take common this C, तो ये हो गया M plus N is equal to MB plus NA. So the C will become MB plus NA by M plus N. Clear? Lakshya and Kush? Yes. Okay, very good. Please note down this. Next externally और करते हैं, then we will try some questions. Then after this, please write a note. If C is the midpoint of AB, if C is the midpoint of AB, midpoint of AB. Okay, and tell me the final answer for this one. C कितना आएगा? Kush, very good. Lecture, please note down this and tell me the final answer of this one. Yeah, this done.
So मैं टाइप कर ओके ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मतलब m/n जो होगा दैट इज 1:1. 1 you will get C is equal to B plus A by actually यही आ रहा था आंसर. Yes, sir. Okay, very good. Start करते हैं. Next is second one. Second is external division. Okay, so formula आपको पता है. For external division, this OC, okay, this will become MB plus negative sign आ जाता है यहाँ NA by M minus A. Okay. So we write करते हैं. So we have taken origin here. We have point here A. We have another point B. And we have then, okay, we will join this O to A, O to B. Next, we will take a point C. External है, that's why C will lie outside the CB. क्या करेंगे हम इसको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो जब C outside lie करता है outside of AB, then we will say that this is external division. And C हमने यहाँ ले लिया. This is C. Position vector लिख देते हैं फिर. This is OC, and this is A, this is B, and this is C. Okay, now this is a straight line. Draw ठीक से नहीं आया. This is complete is a straight line. C lie outside AB, so we will say that this is external division. We'll do the proof of this. If we will check the previous one, हमने M क्या लिया था? A to C. यहाँ भी this complete one is complete. So इसको हम M लेते हैं. And N हमने क्या लिया था? B to C. इसको हम फिर इसको हम N लेते हैं. This is N. ये complete M हो गया. And this complete is M. Then again we will write in the same way. So AC by this one BC is equal to M by N. So again cross multiply. ठीक है, ये AC है complete one. BC is M by N हो गया. Now cross multiply this N into AC. N into AC is equal to M into BC. N into AC का मतलब वेक्टर ले लेते हैं या BC वेक्टर ले लेते हैं. This is equal to N into this means C minus A is equal to this is M into C minus B. It's equal to NC minus NA is equal to MC minus MB. Shift this C to this side. या फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. तो ये MB यहाँ आ जाएगा. MB minus NA is equal to MC minus NC. This is M. C common from here, so you take a MB minus NA is equal to this C common, so you take a M minus N. तो C कितना आ जाएगा? MB minus NA by M minus N. Okay, so please note down this and let me know if you have any doubt in this. Very good.
Let's please let me know once this is done. Done. Okay, that's very good. Then let's try the question. Question is find the position vector. Find the position vector of the points which divide the join of the points b minus 3b and 3a minus 2b internally and externally and externally in the ratio of 2:3. In the ratio of 2:3. Okay. So find both internally and externally. Yeah, and just use the direct formulas to be given it. Just put the values in that, आपके पास answer correct आ जाएगा. You get the answer 12a minus 13b by 5. Very good question. That's correct. Good. Very good. Second is also correct. Lecture, please let me know once you will complete it. Lecture, very good. That's correct. Very good lecture. Good. Now please try the second one. Number 2. Number 2 is if A and B, if vector A and vector B are position vectors, are position vectors of point A and B respectively, point A and B respectively, and then find the position vector, position vector
of points of intersection of points of intersection points of intersection of AB. Okay, please present. Could get the answer, find the position vector the point of intersection of A. Sorry, not intersection, this is trisection. Trisection. Okay. And we have position vector, find the position vector point of trisection of A. That means, sorry, so that means that we have 2 points A and B. This is the origin. And you need to find the position vector trisection. Trisection means you need 2 points, let this be C and D, which divide this complete AB equally. So AC is to CD is to BD is 1, 1 and 1. ठीक है? Now please complete it. आपको CD 2 पॉइंट फाइंड करने Okay, good, very good. Get this. So the first point is B plus 2A by 3, and next is 2B plus A by 3. Very good question. That's correct. Lakshya, please complete it and let me know if you have any doubt in this one.
कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड, लेट्स शेयर दिस करें. Very good. This is also correct. Okay, then please start third question. It is find the position vector of a point. Find the position vector of a point. Vector of a point. Vector which divides the line segment. Which divides the line segment. Which divides the line segment joining P and Q. Joining P and Q. Whose position vectors are whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b. A minus 3b externally in the ratio of of 1:2. Okay, also show that P is the midpoint. Also show that P is the midpoint. P is the midpoint of the line segment RQ. Of the line segment RQ. Okay, and this question came in CBSE 2010. Please try the question. Please let me know once you complete the third question, or if you have any doubt in third question, then also please tell me.
This answer is not correct. Okay, please again check. Externally है. Okay, ध्यान रखना this is externally, so you need to put the formula of externally. और सब same रहेगा, simple question है. Just you need to write the okay कुछ का आंसर कुछ आप भी कहीं मिस्टेक हो रही है. Answer is not correct. Externally है, so you need to put a negative sign. ठीक, अब होता है कि इन केसेस में ये जो क्वेश्चंस होते हैं गॉट योर पॉइंट. ठीक है, मैं समझिए आप कहाँ मिस्टेक करें. ऐसे क्वेश्चंस में जब भी वो आपको कुछ देता है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूला. ठीक है, डेरिवेशन कुछ नहीं करना आपको. तो क्या करना है, आपको क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर, और चाहिए आपको. ओके, which divides a line segment P and Q whose position vector are this one. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया. ठीक है, ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q. इनका रेशियो भी वो दे रहा है, ये कहीं एक्सटर्नली है. तो आप क्या करेंगे, अगर ओ आर चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज m into q, m into q, we can say oq minus n into op by m minus a. और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको कुछ ऐड सबट्रैक्ट नहीं करना होता, जस्ट पुट द फॉर्मूला जैसा है, जस्ट पुट द फॉर्मूला. नाउ पॉइंट पी के आपके पास है वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर हैं, क्यू के भी हैं. Please solve it and tell me what's the final answer you are getting. Please put in this formula and tell me the final answer you are getting. कुछ अभी भी ठीक नहीं है. m क्या था हमारे पास, m is to n यानी 1 था. q क्या था, q था a minus 3b minus n क्या था, 2 था. What is p, a plus b. Okay, by 1 minus 2. Open this, a minus 3b minus 4a minus 2b by minus 1. By minus 1. Okay, so this is equal to a minus 4a का मतलब minus 3a. This means minus 5b by minus 1. So कहीं mistake कर रहे हैं. Sorry, this is 3a plus 5b. Okay, okay, लक्ष्य आपका आ चुका था आंसर. Sorry, लक्ष्य, your answer was correct. ठीक है, आप काफी पहले आंसर दे चुके थे. Sorry for that. कुछ का नेक्स्ट टाइम आंसर ठीक आ गया था. Very good. Please find the next one. आपको शो करना है that P is the midpoint of the line segment RQ. Please show that P is the midpoint of the line segment RQ. Midpoint शो करना है तो आपको पता है कैसे कर सकते हैं. लक्ष्य काफी पहले दे चुके थे स्टार्टिंग में ही. Okay, कुछ good. लक्ष्य, please do the second part. कर लिया. Second कर लिया है ना, चेक कर लिया ना, midpoint आ रहा है. Okay, then please note down this fourth question. This is your homework. आंसर मैंने यहाँ दे दिया. This is your homework. Please write this question. Okay. Good, very good. Lecture, please confirm once this is done, then we will start the next one. हो गया, स्टार्ट करें नेक्स्ट.
Okay, this time. Done, sir. Okay. Then we will start the next topic. Next is components of a vector. Next is components of a vector. Okay, so we will draw x, y, and z axis. So उस क्वेश्चन का आंसर क्या था फिर? What are this? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Components of a vector. This is what, this is y, this is x, and this is it. Okay, ये origin है हमारा. This is your origin. अब अगर हम 3 points इसमें लेते हैं, point A हम लेते हैं 1, 0, x हम B लेते हैं, which is 0, 1, 0, and we will take as another point C, which is 0, 0, 0, and 1. Okay. इसको mark कर देते हैं यहाँ. This is point A, point B, and this is point C. This is what? This is 1, 0, 0. This is what? 0, 1, 0. This is what? 0, 0, 0, 0. Okay. Now find the, this is O. ठीक है, अगर आप फाइंड करते हैं OA, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1. OB अगर हम फाइंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये भी 1 होगा. अगर OC हम फाइंड करते हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. ठीक है, ये हमें पता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है these are 1, 1, 1, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा. Now अगर हम इन वेक्टर्स की बात करते हैं, the vectors OA, OB and OC are called unit vectors. Are called unit vectors along the axis OX, OY, and OZ respectively. OZ respectively. And denoted by I cap, J cap. ठीक है, ये आपने कभी किया होगा आई गेस फिजिक्स में, इफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स. अदरवाइज आप कर लेते हैं. ओके, इनका मैग्नीट्यूड 1 है. सो इन वेक्टर्स को, ये वेक्टर OB and OC, these are called the unit vectors along the x axis, y and z axis. ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा. एंड डायरेक्शन क्या होगी इसकी, these are the directions. So these are I cap, J cap and Z cap. एनी डाउट यहाँ तक? ये कोई प्रॉब्लम है? Done, sir. Okay, then please note down this, confirm me, then we will start from the next slide. Let's see. Then Done, sir. okay. तो ये तो क्लियर हो गया. This is I cap, J cap and K cap. Now suppose yeah, this again x, y and z. एक स्पेस में एक पॉइंट लेते हैं. Let this be a point in a space. या अगर स्पेस में डिनोट करना है हमें, हम कैसे कर सकते हैं, वर्ड फॉर्म करते हैं.
वर्ड फॉर्म करते हैं, दिस इज द पॉइंट। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हमें लग जाएगा दैट दिस पॉइंट इज इन स्पेस, ये स्पेस में एक पॉइंट है। ओके, इसको हम ज्वाइन करते हैं, रीजन हमने ज्वाइन कर दिया, दिस इज ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा, अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको आर से हम डिनोट कर देते हैं। तो ये आर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो हमें अगर ये ओपी फाइंड करना है, वेक्टर ओपी, दैट मींस आर, तो ये क्या होगा, दिस विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, and we will just add I cap, J cap, Z cap, K cap with that, so that उसकी हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो लक्ष्य एंड कुश, दिस इज क्लियर। लक्ष्य एंड कुश, दिस क्लियर। Okay, कुश, लक्ष्य, this clear. Okay, so this form of any vector, this form of any vector called is called its component form. Its component form. Okay, this form is of any vector is called its component form. ये component form हो जाती है. Here x, y, z. Here x, comma y, comma z are called as the scalar component, as the scalar component, as the scalar component of R. Okay, so x, y, z are called the scalar component, and this one x I cap, x I cap, y j cap, y j cap, and z k cap are called the vector component of R. Are called the vector component of R. Okay, so these are called the scalar component, and these are called the vector component of R. Please note down this, and sometimes these are also called the rectangular component. Sometimes x, y, and z are called rectangular component. Are called rectangular component. Okay, so please note down this, confirm me, then we will do the further topic. Please confirm me once. Okay, like here. Please confirm once this time. Share this time. So last one. Oh.
None. ओके, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी आप मुझे बता सकते हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू √x² + y² + z². So this is the magnitude of this. So please note on this. Magnitude हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, xi cap का मैग्नीट्यूड प्लस yj cap का मैग्नीट्यूड प्लस zk cap का मैग्नीट्यूड. Okay, and this is equal to √ of x² + y² + z². Please note down this, confirm. Okay, okay, okay. नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं. इफ वेक्टर a and b, if vector a and b are any two vectors, or any two vectors given in the component form, given in the component form a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Okay, then the first part is a plus b. a plus b क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे आई कैप वाले कंपोनेंट्स. a1 plus b1 आई कैप ऐड होगा. जे कैप के कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे a2 plus b2 जे कैप plus a3 plus b3 के कैप plus b3 के कैप. सेकेंड a minus b, ये क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. a1 minus b1 आई कैप plus a2 minus b2 j cap plus a3 minus b3 k cap. थर्ड क्या हो जाएगा? a is equal to b. a is equal to b कब होगा? when a1 is equal to b1 होगा, a2 is equal to b2 होगा, a3 is equal to b3 हो जाएगा, a3 is equal to b3 हो जाएगा. Multiplication of vector a, multiplication of vector a by any scalar. Okay, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बाय एनी स्केलर लैम्डा. तो अगर लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके सब कंपोनेंट्स लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप. ओके, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, इसको फिर हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं. प्लीज नोट ऑन दिस. Okay. Okay, tell me one thing. ये vector A and lambda A, these two are vector are collinear or not? A and lambda A collinear होंगे या नहीं होंगे? हमने किया था ना लास्ट क्लास में what are collinear vectors. तो ये दोनों collinear होंगे या नहीं? Kush and Lakshya. Kush and Lakshya collinear vector हम कर चुके हैं ना. Check the definition और फिर मुझे बताइए कि vector A and lambda A ये दोनों vectors collinear हैं या नहीं?
Yes or no? Kush hai Lakshya? So, हाँ, Hey. yes, Okay, Kush? Kush, yes or no? लैम्डा स्केलर बिल्कुल सही है. ये लीनियर होंगे या नहीं? No. Why no? Kush, just check the definition of collinear. क्या हमने मेंशन किया था collinear vectors में? क्या होते हैं collinear vectors? If they are parallel to the same line, है ना? तो कह रहा हमारा suppose ये vector A था, ये इतना है. This is parallel to this line. अब हमने क्या करा, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया. फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया. डायरेक्शन तो वही है, तो 2a ये हो गया. 2a and a are collinear. Yes, they are collinear because they are again parallel to the same line. इसको माइनस a से मल्टीप्लाई किया हमने, हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, बट स्टिल दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन. So a and lambda a are collinear. Check the definition में लिखा था ना, irrespective of magnitude and direction, सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए. सो यस, ठीक है, एक नोट कर लेते हैं, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे कोलिनियर. एक नोट भी कर लेते हैं. नोट a and lambda a are collinear vector. collinear vector, प्लीज इसको याद रखिएगा. फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे collinear vector अगेन, वहां हम यूज करेंगे दिस definition. Please note down this, confirm me, then we will start the next. We will try some questions. Please confirm once this is done. Okay, lecture this done. Okay, very good. yes. Please try this question. Question is, find the value of x and y. Find the values. Find the values of x, y, and z, so that the vectors, so that the vectors, so that the vector a is equal to xi cap plus 2j cap plus zk cap, and b is equal to 2i cap plus yj cap plus k cap are equal. Okay, find the values of x, y, and z so that these two vectors are equal. Please try this. Okay, कुछ आपके आंसर आ गए थे. x is 2, z is y is 2, and z is 1. Very good. This is correct. Lecture, please tell me the answer. Lecture this time. So, Okay. Same answer, lecture. x2, y2, z1. Lecture. yes, sir. वो टाइप कर रहा हूँ. Okay, okay. नहीं नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हैं. Okay, very good. Then please start the next one, second, and share your answer. Kush, very good.
Same question, second part, Lakshya. Same question, second part. Very good question. That's correct. Please start the next question and Lakshya, tell me the answer for the second one. Type करने की जरूरत नहीं है लक्ष्य, ऐसे ही बता दीजिए ना. थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास. We are just 9 minutes. So A vector is equal to B vector. So root 5 आ गया. Magnitude तो same है, that's correct. But क्या ये equal भी है? Equal कब होता है? कब कहते हैं हम vectors equal है? Lakshya, what's the definition of equal vectors? Check कीजिए definition. So जब same magnitude और same direction होगा. Magnitude same है, that's okay. ठीक है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. अब इससे पहले हमने ये भी करा था. जैसे कि टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन a1 is equal to b2, a2 b2. मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, बट इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए. तो यहाँ क्या कंपोनेंट सेम है? No sir. No. Okay, so these two are not equal. Magnitude same है, but not equal. Okay, then start the third one. And लक्ष्य कुछ का आंसर मेरे पास आ गया है. 4, 9, 13 and 14. Very good question. This is correct. Then try the fourth one. Okay, Kush, you get the answer. Next is 7 minus 14 by root 5. Very good. That's good. Lakshya, this one. Lakshya, this time. Yes sir. Okay, so next is 2 by root 14, 3 by root 14 plus 1 by root 14. Very good, Lakshya. This is correct. Now please try the fourth one. कुछ इसमें जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था वो डिलीट हुआ है, ठीक है. तो बुक के एंड में जो एक टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो आपको डिलीट कर देना है. There's the next answer, and if you have a doubt, then please tell.
lecture, this is correct. 7 minus 14 by root 5. Very good lecture, this is correct. Okay, so please note down the homework. आज ज़्यादा homework नहीं दे रहे हैं क्योंकि कल ही हमारी क्लास है मॉर्निंग में 10:30. अभी इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है. So right now, please note down this homework. 10.1, 10.2, question number 1 to 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, and 19. Okay. Okay, sir. Okay. And thank you. कल हम इसको पे कंटिन्यू करते हैं. प्लीज होमवर्क लेकिन कंप्लीट कर लिया कल तक. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, okay, you're welcome.